Welcome to ASWINI classes. In this video we are going to discuss coordinate geometry. This is in class 10 as well as in class 11. Coordinate geometry is a branch of mathematics in which we study geometry in terms of algebra. Also in coordinate geometry we use 2 points, we use 2 numbers in this way, x, y in a bracket, to indicate position of a point called coordinate of the point. एक पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए यहाँ इस तरह से हम लोग 2 नंबर x और y को हम लोग यूज करते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट. एंड सो वाई दिस ज्योमेट्री is called coordinate geometry also. Coordinate geometry means here we use coordinate. This is called coordinate. We discuss in detail to express or to indicate a point in this geometry, and so why it is also called coordinate geometry. So first of all we try to understand what is coordinate, because coordinate geometry start with coordinate. Okay, let 2 perpendicular lines are there, x dash and y dash are 2 perpendicular lines meet each other at point O. Then this x dash and y dash are called, this is y dash, are called coordinate axis, or simply x axis and y axis respectively. And x axis and y axis are together called coordinate axis. Coordinate axis means it is combinedly x axis as well as y axis. And this point, that is the point of intersection of x axis and y axis, is called here origin. It is called origin. Now if any point is there in this plane, these 2 axes are in a plane. So suppose here is a point P. Okay, we want to locate this point. We want to find its location. Where is this point? We find the position of this point with respect to these 2 perpendicular lines called coordinate axis. इस coordinate axis के respect में हम लोग पता करेंगे कि ये point कहाँ है. तो ये point कहाँ है, इसको पता करने के लिए इसका distance लेंगे from x axis. What is its distance from x axis? You have to draw a perpendicular on x axis. Then this will gives you distance of the point from x axis, and this is the distance of the point from y axis, is not it? So by taking distance of the point from x axis as well as from y axis, this is the distance from y axis, this is the distance from x axis. So these 2 distances together indicate position of this point. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को एक साथ लेकर के हम लोग इस P पॉइंट का पोजीशन निकाल सकते हैं. दिस डिस्टेंस, दिस इज आल्सो कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टुवर्ड्स एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस की तरफ कितना डिस्टेंस पर है इधर, लेट अस टेक इट x. ओके, एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टुवर्ड्स y एक्सिस, y एक्सिस की तरफ कितना दूर गया है, let us denote it by y. So these 2 distances, one is x and another is y. X and y together indicate position of this point. ये दोनों को एक साथ लेकर के हम लोग इस P पॉइंट का पोजीशन बता सकते हैं. ये बता सकते हैं कि P पॉइंट कहाँ है, और इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं P ब्रैकेट में x, y, and we read it Pxy. Means P is a point whose coordinate is xy. इसको हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, P is a point of coordinate xy.
means P is a point whose distance towards x-axis is x and towards y-axis is y. This x distance means distance towards x-axis, or you can say distance from y-axis, a distance same, is called x coordinate of the point, or it is also called abscissa, x coordinate or abscissa. And distance of this point towards y-axis, or you can say from y-axis, y-axis से कितना distance पर, is called its y coordinate, and y coordinate is also called ordinate. X coordinate is called abscissa and y coordinate is called ordinate, ordinate of the point. And this abscissa and ordinate together indicate position of the point. This side, when we measure towards x-axis, it will be taken as positive. If we measure this side along x-axis, back side, then we take negative. Along y-axis, upward positive, downward negative. So if any point is there in this quadrant, suppose here is any point, so what is its distance towards x-axis? This will be taken as negative, and towards y-axis positive. So its x coordinate will be negative, y coordinate will be positive. If any point is there in this quadrant, this is called first quadrant, this is called second quadrant, this is in third quadrant, then its x coordinate means distance towards x-axis will be taken as negative, means x coordinate will be taken as negative, and its y coordinate will also be taken as negative. नीचे तरफ लेंगे ना, y coordinate means distance towards y-axis. So both the coordinate will be taken as negative. If any point is in this quadrant, means in fourth quadrant, its distance towards x-axis will be taken as positive, and its distance towards y-axis will be taken as negative. So if any point lies in first quadrant, its x and y, both the coordinate will be positive. If any point lies in second quadrant, its x coordinate negative, y coordinate positive. If any point lies in third quadrant, its x and y, both the coordinates are negative. If any point lies in fourth quadrant, its x coordinate positive but y coordinate negative. Let us see. Take some particular example. This is XO X dash x axis, and this is suppose YO Y dash y axis, and this is denoted by O, called origin. This side we take positive distances like 1, 2, 3 and so on. This side we take negative distances 1, minus 2, minus 3 and so on. Upward side on y axis 1, 2, 3 positive distances, and this side minus 1, minus 2, minus 3. Okay. Now suppose any point is here, 2 distance this side and 3 distance this side. Here is a point. Then its x coordinate will be 2 and y coordinate 3. Understood? So this point will be written as 2, 3. It is called ordered pair. Ordered pair as well as coordinate of the point. Coordinate of this point is 2, 3. 2 is called x coordinate, 3 is called y coordinate. Suppose minus 3 distance this side and 3 distance this side. There is a point here in this location. Then its coordinate will be written as minus 3, 3. Its x coordinate is minus 3, y coordinate is 3. Its distance towards x-axis is minus 3, towards y-axis is 3. So this point will be written as minus 3, 3. X coordinate will be negative, y coordinate positive, because it is in second quadrant. If suppose any point at a distance minus 1 towards x-axis and minus 2 towards y-axis, so this point will be written as minus 1, minus 2.
means this is a point whose x coordinate is -1, means distance towards x-axis is -1 and distance towards y-axis is -2, in this way. If there is a point along x-axis at a 3 distance, along y-axis at a -2 distance, then this point will be written as 3 -2. Okay, so in this way, by writing coordinate, we can indicate position of a point, or we can indicate position of a point on the plane. Secondly, if suppose these are coordinate axes, x-axis and y-axis, here x-axis and y-axis both are perpendicular to each other, so why these are also called rectangular coordinate system. Rectangular coordinate or coordinate, same thing. Rectangular means axes are perpendicular to each other. If you take any point on the x-axis, कोई point अगर सीधा x-axis के ऊपर ही लेते हैं, its y coordinate will be 0, because its distance towards x-axis is there, but distance towards y-axis is 0. If this distance is x, then this point will be written as x0. So any point on x-axis anywhere, its y coordinate must be 0. If any point is there on y-axis, suppose this height is y, its x coordinate 0, y coordinate is y. X coordinate 0 means its distance towards x-axis 0, because it lie on y-axis. So any point lies on x-axis having y coordinate 0, and any point lies on y-axis having x coordinate 0. What will be coordinate of this point? Means this origin, its distance towards x-axis 0, towards y-axis is also 0, so this point will be written as 0 0. So coordinate of origin is written as 0 0. Okay, so I hope you have understood what does it mean coordinate of a point. How can we write coordinate in different quadrants, whether the point lies in first quadrant or second quadrant, third quadrant or fourth quadrant. Okay, now the next thing is we have to find distance of 2 points. If coordinate of 2 points are given, we have to find their distance. Let us see. X O X dash and Y O Y dash are x and y axis respectively, and 2 points are here. Suppose one point is, take here, suppose P, whose coordinate is suppose x1 y1, and there is another point, suppose here, that is Q, its coordinate is suppose x2 y2. 2 points are there in the plane, one is x1 y1 and another is x2 y2. We want to find this distance of point P and point Q. This is what we are going to learn here. See, point P is given x1 y1, it means its distance towards x-axis is x1, this distance is x1, and its distance towards y-axis is y1, its height is y1. This point is given x2 y2, it means its height is y2 and its distance towards x-axis is, this distance is your x2 and this height is y2. Okay, now from P, if you draw a perpendicular, let us take, and this point is suppose M. Okay, from P, this PM is taken perpendicular. Okay, so clearly what will be this distance? Means QM
this height is y2 and this height is same as this. This is y1, is not it? Same as this, and this complete is y2. So this height will be your y2 minus y1. It's not it. QM will be your y2 minus y1. And what will be this? This distance यहाँ से यहाँ तक x2 और यहाँ तक x1, तो ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा x2 माइनस x1, और इसके सेम ये होगा, इसलिए ये पार्ट भी होगा x2 माइनस x1, and this height will be y2 minus y1. Now see, this is a right angle triangle. So in this right angle triangle, this is 90. So this is PQ is your hypotenuse. So hypotenuse can be calculated. Perpendicular is there, base is there. So can you calculate hypotenuse? We know hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse square, PQ square equal to this QM square plus this PM square. QM, this is QM. QM is y2 minus y1, is not it? It's square. Plus PM. PM is x2 minus x1. It is your x2 minus x1. It's square. So PQ square can be written as x2 minus x1. You can read this first. Y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square, or this can also be written as x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This can also be written as x1 minus x2 whole square will be same as x1 minus x2 whole square. 2 minus 3 का whole square और 3 minus 2 का whole square same होगा. Minus will be taken as common. Minus square is plus, whole square is there. So x2 minus x1 whole square can also be written as x1 minus x2 whole square, plus this can also be written as y1 minus y2 whole square, is not it? So from here we can find distance between x1 and x2, that is PQ distance. PQ distance can be written as root under x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square, is not it? In this way we can find distance PQ. If P x1 y1 and Q x2 y2 are two given points on a plane, then distance PQ can be taken as root under x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. This will be used as a formula for finding the distance between 2 points. What is it? x1 minus x2 means x1 x2 means difference of their x coordinate square, plus y1 minus y2 means difference of their y coordinates is its square. So simply, in order to find difference between distance between x1 y1 and x2 y2, we simply take the difference of their x coordinate square plus difference of their y coordinate square, its root. Suppose there is a point minus 3 2, there is a point 3 minus 5. This point is suppose P, this point is suppose Q. Let us find distance PQ. What will be the distance between these 2 points? Use the formula square root. What is it? Difference of their x coordinate. Its x coordinate minus 3, its x coordinate 3. So you will write difference of their x coordinate minus 3
माइनस दिस 3 एक्स स्क्वायर इन दिस वे, दोनों का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आप ले लिए, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लीजिए, इसका y कोऑर्डिनेट है 2 माइनस इसका y कोऑर्डिनेट है -5, ऐसा ये हो गया डिफरेंस ऑफ देयर y कोऑर्डिनेट एक्स स्क्वायर, ऐसा this will gives you distance PQ. So this will be -3 -3 minus minus plus, what sign of minus, -6 square plus it is 2 minus minus plus 5 x square. So it is root under -6 square, minus square plus 6 square 36 plus 2 plus 5 7 square 49. So now you can write 9 and 6 15, 5 carry 1 and 4 5 and 3 8, 85. So root 85 will be the distance between PQ. In this way we can find distance of any 2 points on a given plane. Now XO x dash and YO y dash are coordinate axis and O is the origin. If any point is there XY on the plane, what will be its distance? This is P, suppose. What will be OP? OP distance means distance of any point from origin. Simply this distance is your x, this distance is your y. So what will be this OP? Root under x square plus y square. So root under x square plus y square gives you distance of any point from origin. As a distance of 2 3 is a point from origin. Origin is 2 3 का डिस्टेंस क्या होगा ओरिजिन से? Its distance will be simply root under 2 square plus 3 square, that is 4 plus 9 13 is the distance of the point 2 3 from the origin. Okay, so I hope you have understand what does it mean coordinate of a point, as well as you have understand how to write coordinate in different quadrant, whether the point lies in second quadrant, third quadrant or fourth quadrant. Then after you have also understood how to find distance between 2 points if their coordinates are given. 2 points अगर दिया हुआ है उसके बीच का आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी ए प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम लिखिए बेस्ड ऑन दिस डिस्टेंस फॉर्मूला, सो दैट the points 1 5 2 4 1 5 2 4 and 3 3 and 3 3 are collinear. This is what is your question. So that the point 1 5 2 4 and 3 3, 3 points are there, means coordinate of 3 points are given. Question is so that they are collinear.
कोलिनियर मतलब इफ 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो, इधर से भी ऐसा, देन द पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, अदरवाइज नॉन कोलिनियर। आपको बताना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होगा, कोलिनियर होगा। ये कैसे संभव है दिखाना कि तीनों कोलिनियर है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी, कैसे भी है, जैसे मान लीजिए ऐसे है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, जैसे भी है, अगर एक ही लाइन में है तो ये ए बी, बी सी और ए सी, ये जो 3 डिस्टेंस है, 3 में से कोई 2 का सम तीसरा के बराबर होगा। ए बी प्लस बी सी मस्ट बी इक्वल टू ए सी, देन यू कैन से ए बी सी आर कोलिनियर। जैसे ए बी सेम थिंग, बी ए प्लस सी ए मस्ट बी इक्वल टू बी सी, देन यू कैन से यस दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट है, एक है ए, एक है बी, एक है सी, तो आपको निकालना है ए बी, एक निकालना है बी सी, एक निकालना है ए सी। ये 3 में से कोई 2 का सम तीसरा के बराबर होगा। आउट ऑफ दिस 3, सम ऑफ एनी 2 विल बी इक्वल टू थर्ड, देन ओनली वी कैन से यस 3 पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। इज द प्रोसेस टू शो 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। समझे बात? ए बी सी कोई कहीं हो, सी आगे हो, बी आगे हो, ए आगे हो, कोई बीच में हो, ए बी, बी सी, ए सी निकालेंगे, क्योंकि यही 3 डिस्टेंस हो सकता है 3 पॉइंट में, कोई 2 का सम तीसरा के बराबर होगा। तो यू विल राइट सिंपली लेट द पॉइंट्स आर, ये पहला जो पॉइंट है उसको ए ले लेते हैं 1 5, बी ले लीजिए सेकंड पॉइंट, एंड C 3 3. Okay. So what are the distances we have to take? एक लेना है AB, दूसरा लेना है BC, तीसरा लेना है AC। हम लोग एक डिस्टेंस निकालेंगे AB, एक डिस्टेंस निकालेंगे BC, एक डिस्टेंस निकालेंगे AC। उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे तीनों का, डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस में नहीं लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है। और ये तीनों में से कोई 2 का सम तीसरा के बराबर होना चाहिए। मतलब हम लोग ये निकालेंगे मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस माइनस में भी होता है ना, तो जब डिस्टेंस लेंगे तो उसको पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। व्हाट विल बी ए बी? ये ए बी कैसे निकालेंगे? रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर, समझ गए, प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यहां 5 यहां 4, इसका स्क्वायर का रूट, सिंपल। x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 - 2 होल स्क्वायर, 5 - 4 होल स्क्वायर इज द वे टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 1 - 2 -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 5 - 4 1 का स्क्वायर √2। रूट में प्लस माइनस आता है ना, तो हम लोग यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, इसीलिए मैग्नीट्यूड लिखे, ठीक है। रूट का 2 वैल्यू आता है, प्लस में माइनस में, तो हम लोग यहाँ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। BC डिस्टेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ देयर एक्स कोऑर्डिनेट, ये 2 - 3, समझ गए, इसका होल स्क्वायर, प्लस 4 - 3, ऐसा सिंपल। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर ले लीजिए, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर ले लीजिए। सो इट इज 2 - 3 -1 स्क्वायर, 4 - 3 1 स्क्वायर, इट इज ऑल्सो √2। फाइंड AC, A और C का डिस्टेंस निकालना है। ये देखिए यहां है 1, यहां है 3, सो √1 - 3 इसका होल स्क्वायर, प्लस 5 - 3 इसका होल स्क्वायर। इन दिस वे यू कैन फाइंड डिस्टेंस।
1 माइनस 3 माइनस टू स्क्वायर प्लस 4, 5 minus 3 2 square is 4, so it is root 8. 8 can be written as 4 into 2. तो जरा देखिए क्लियरली AB distance plus BC distance is equal to AC distance, नहीं है, ये है √2 ऐड करेंगे तो 2√2 है ना, and hence A, B, C are collinear. Hence A, B, C are collinear. समझे? तो देखिए ए बी और बी सी का सम ए सी है, इसका मतलब है कि ए सी है और बीच में बी है, तभी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ रहा है। हो सकता था कि बी इधर हो ए उधर हो, तो अकॉर्डिंगली आता फिर। ठीक है, 3 डिस्टेंस निकालिएगा, 3 में से कोई 2 का सम जब तीसरा के बराबर होगा तो आप बोल सकते हैं कि तीनों कोलिनियर होगा। एक और सवाल देखिए, एक सवाल लीजिए। सो दैट the 4 points (1 minus 2 3 6 1 minus 2 3 6 5 10 5 10 and 3 2 and 3 2 are the vertices of a parallelogram. This is what is your question. 4 पॉइंट्स दिया हुआ है, 1 minus 2 3 6 5 10 and 3 2, 4 वर्टिसेस है। शो करना है कि these 4 points are vertices of a parallelogram. ये 4 पॉइंट्स दिया हुआ है, ये चारों पॉइंट एक पैरेललोग्राम का वर्टिसेस होगा, ये आपको प्रूफ करना है। पॉइंट्स 1 minus 2 3 6 5 10 3 2, ठीक है, ये 4 ऐसा करके 1 minus 2 3 6, एक पॉइंट है 5 10, एक पॉइंट है 3 2, ऐसा है, 4 पॉइंट्स दिया हुआ है। या आप ऐसे समझ लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि वो पैरेललोग्राम तो बाद में ना, ऐसे 4 पॉइंट दिया हुआ है 3 6 5 10 एंड 3 2, बोल रहा है कि ये चारों पॉइंट जो है ना एक पैरेललोग्राम का वर्टिसेस होगा, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, so now question is how will you prove these are vertices of a parallelogram? एक पैरेललोग्राम का वर्टिसेस होगा, ये कैसे दिखाएंगे? मान लेते हैं ये पॉइंट सब ए बी सी डी है। let the points are A, second one is B, third one is C and D, ये पॉइंट है ए बी सी डी। ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम का वर्टिसेस होगा। पैरेललोग्राम कैसे होता है भाई? कैसे हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम का वर्टिसेस होगा?
means you have to show ABCD is a parallelogram, then only ABCD are the vertices of a parallelogram. In a parallelogram what happened, क्या होता है पैरेललोग्राम में, ऑपोजिट साइड पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा इसका, ये पैरेलल होगा इसका, साथ में इक्वल होगा, AB इक्वल होगा CD का और AD इक्वल होगा BC का। पहला तो हम दिखा देंगे कि AB डिस्टेंस और DC डिस्टेंस इक्वल है और AD डिस्टेंस और BC डिस्टेंस इक्वल है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, और खाली ऑपोजिट साइड इक्वल होने से पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल में भी तो ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है, रेक्टेंगल में भी, स्क्वायर में भी होता है, स्क्वायर में तो चारों इक्वल होता है। तो पैरेललोग्राम में अलग क्या है, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर दिखाने से खाली पैरेललोग्राम आप नहीं बोल सकते हैं, वो तो रेक्टेंगल भी हो सकता है। पैरेललोग्राम में देखिए, जैसे पैरेललोग्राम थोड़ा ऐसे होता है ना, पैरेललोग्राम में ये डायगोनल का लेंथ बराबर नहीं होता है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। बट इन केस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होगा कि ये दोनों डायगोनल का लेंथ सेम होता है। सो इन ऑर्डर टू शो ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शो AB इक्वल टू CD and AD equal to BC. Secondly, you show diagonal AC and BD are not equal. If equal, then it becomes rectangle. Okay. So in this way we can show, yes, these are vertices of a parallelogram. तो पैरेललोग्राम का वर्टिसेस निकालने के लिए क्या क्या आपको निकालना पड़ेगा, AB निकालना पड़ेगा, AB साइड, BC निकालना पड़ेगा, CD निकालना पड़ेगा, AD निकालना पड़ेगा। देखिए ना, ABCD है तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, AB BC CD AD चारों साइड निकालेंगे पहले, उसके बाद ये डायगोनल निकालेंगे, AC BD, AC as well as BD. These many distances you have to calculate. Then after we can say these 4 points are vertices of a parallelogram or not. Okay. So let us find one by one. AB, ये AB distance निकालिए, 1 minus 3 minus 2 minus 2 square plus minus 2 minus 6 minus 8 minus 8 square minus square plus. In this way directly we find. So it is root 68. समझे, सीधा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लीजिए, 1 minus 3 minus 2 का स्क्वायर 4 और 2 minus 6 minus 2 minus 6 minus 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो जाएगा 64 and 4 68. Okay, this will be root 68. BC निकालिए, देखिए डायरेक्ट निकालिएगा, 3 minus 5 2 2 का स्क्वायर 4, अब उतना फॉर्मूला पर मत जाइए, 6 minus 10 minus 4 का स्क्वायर 16 रूट 20। समझ गए। आइए CD पर, C देखिए उधर 5 10 है, ये है D, 5 minus 3 2 इसका स्क्वायर 10 10 minus 2 8 का स्क्वायर। समझ गए। AD निकालिए, ये है A, ये है D, 1 minus 3 minus 2 स्क्वायर प्लस minus 2 minus 2 minus 4 AC 1 minus 5 minus 4 स्क्वायर minus 2 minus 10 minus 12 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 12 का 144, तो हो जाएगा 50 60 160।
एंड व्हाट विल बी BD, ये है B, ये है D, सेम रूट 3 माइनस 3 0 एक्स स्क्वायर, 6 माइनस 2 4 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 16. ओके, नाउ सी AB, ये AB कितना है और नीचे क्या होना चाहिए, DC या CD कितना है. सो यू कैन से AB इक्वल टू CD, एंड इधर का साइड AD, ये AD how much it is, AD is root 20, and that side CB is also root 20. So you can say AD is equal to BC, opposite sides are equal. Also what is AC, diagonal है, AC कितना है, रूट 160, और ये BD क्या है, सॉरी BD, डायगोनल एक AC है एक BD है. AC is root 160 and BD is root 16. Obviously they are not equal. ये तो इक्वल नहीं हुआ ना. So what we are getting, AD equal to AB equal to DC or CD, and AD equal to BC, means opposite sides are equal and diagonals are not equal, and hence ABCD is a parallelogram. Hence ABCD is a parallelogram. In this way we can use distance formula for solving this type of problems. So I hope you have understood coordinates of a point, distance formula, and application of distance formula. So in this video keep this much. In the next video we discuss another topics. Many more topics are there. Thank you for watching.